वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले एक बार हम याद कर लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी को, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बिग बुल पाइपर के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर झुनझुनवाला, वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ही वाज। मेरी मुलाकात उनसे 2012 में हुई थी, पहली बार जब एक अवार्ड सेरेमनी में मुझसे मिले थे। ही कैरिड एन ऑरा, और उस 30 मिनट में उन्होंने मेरी पूरी नजरिया बदल दिया इक्विटी मार्केट्स के बारे में। He was very optimistic, very witty, and a firm believer in India's story. He'll always be remembered. Peace to his soul. चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल, नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स के, एंड मिस्टर अमर सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पे। और विवेक मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए आज के क्यूज क्या है बाजार की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, एशियन मार्केट से तो क्यूज पॉजिटिव ही हैं, लेकिन माइल्ड पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह का अमेरिकन मार्केट्स में एक तेजी थी, उसका काफी कुछ इम्पैक्ट मंडे के मार्केट्स में देखने को मिल गया था। लेकिन कल भी अमेरिकन मार्केट्स तेजी के साथ ही बंद हुए। कारण था कि कंज्यूमर और आईटी शेयरों में थोड़ी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बुधवार को फेड्स के मिनट्स जारी होंगे, जिस पर की मार्केट नशे कर बैठा, क्योंकि जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होगी उसमें कितना रेट हाइक होता है उसको लेकर मार्केट बहुत ज्यादा पैनी नजर रखे हुए है। साथ ही अगर देखें तो मेटल और क्रूड की कीमतों में कल 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। कारण था कि चीन के जो जुलाई इंडस्ट्रियल आउटपुट आंकड़े हैं वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला, खासतौर से कमोडिटी के प्राइसेस में। इसके चलते चीन ने कल इंटरेस्ट रेट्स में भी अपनी कटौती की है, करीब 10 बेसिस पॉइंट की। 2.85 से घटाकर उन्होंने 2.75 किया है एक साल की लोन के लिए। साथ ही अगर देखें तो एक पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट को मिल सकती है, लेकिन क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव हो सकती है, कि चीन ने न्यूक्लियर डील होने के संकेत दे दिए। इसका मतलब होगा कि चीन से जो ईरान पर जो लगे हुए सैंक्शन है वो कहीं ना कहीं हद तक हटते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही भारत की जो जुलाई सीपीआई जो महंगाई दर थी ये 7% के नीचे आई है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही आज डब्ल्यूपीआई का भी डेटा रिलीज होगा, तो उस पर भी मार्केट की नजर रहेगी। हालांकि मार्केट के जो बड़े निवेशक हैं राकेश झुनझुनवाला, उनके निधन का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि उनसे रिलेटेड स्टॉक्स पर होता हुआ दिखाई दे, टाइटन एप्टेक जैसी कंपनी। साथ ही डीएफएम फूड की शेयर डीलिस्ट कराने की योजना है। और केकेआर अपना जो मैक्स हेल्थ में करीब 26.83% उनका स्टेक है, वो पूरा आज ब्लॉक डील के जरिए बेच सकता है। करीब 9,000 करोड़ की ये डील होगी, तो उस पर मार्केट की नजर रहेगी। साथ ही एफआईज का डेटा देखें तो एनकरेजिंग है, क्योंकि एफआईज ने अच्छी खरीदारी की है। फ्राइडे के सेशन में भी करीब 3,000 करोड़ की उन्होंने कैश सेगमेंट में बाइंग की, और डीआईज ने करीब 840 करोड़ का माल सेल आउट किया। गुड मॉर्निंग समीर एंड वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर हम आंकड़े देखें और डेटा देखें, काफी पॉजिटिव है। एक तो सेंसेक्स में लगातार 7 हफ्तों से हमने एक बढ़त देखी है। सीपीआई डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स टेपरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, और मॉनसून के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं, 8% अबाव नॉर्मल एज ऑफ ऑगस्ट। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, शेयर बाजार में जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, निफ्टी का 7,700 का लेवल एक बार पार करना, रिक्लेम करना, आगे की दिशा कहाँ की तरफ होती है? Sameer, can you hear me? I think Sameer, I think your connectivity issue की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे। I think you will have to log in once again. अमर के पास चलते हैं तब तक। अमर, 7 हफ्ते की लगातार तेजी निफ्टी में, 17,700 का लेवल रिक्लेम करना और पॉजिटिव डेटा इनफ्लो, कैसा लगता है आपको बाजार यहाँ से? देखिए, बाजार में 2-3 चीजें हैं जो बाजार के फेवर में डेफिनेटली हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट्स में भी हम लोग देखें तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। दूसरा है कि चाइना में जो रेट कट है, दैट आल्सो इज अ पॉजिटिव साइन। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन, कूलिंग ऑफ इन्फ्लेशन का जो फिगर्स आए हैं, दैट्स समथिंग कंसर्टिंग। तो इन सब को देखते हुए और टेक्निकल यदि पैरामीटर्स में देखूं तो वो क्लियरली दिखाते हैं कि जो ट्रेंड है वो मतलब जो मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इफ आई लुक एट द क्वार्टरली चार्ट्स, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मंथली ट्रेंड देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब हायर लेवल्स पे एक
प्रेशर आएगा। बट ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो निफ्टी में अभी, क्योंकि निफ्टी का एक मेजर लेवल 17,000, 17,300, 400, 500 तक का, 300 से 500 जोन का था, उसके ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए निफ्टी जो है, यदि मैं बात करूं तो अप्रैल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 18,114 का हाई बनाया था। तो अभी जिस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो टुवर्ड्स 18,000 लेवल्स, तो डेफिनेटली वी कैन सी निफ्टी प्रोवाइडेड दिस मोमेंटम सस्टेन्स। और दूसरी बात है कि जो शॉर्ट कवरिंग भी काफी हो रही है, क्योंकि जो शॉर्ट में थे, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस टाइप की रैली, उनके भी जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ होंगे, तो वो भी रैली को फ्यूल कर सकता है। बट ये लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच डेफिनेटली रखना चाहिए। और यदि मैं टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करूं तो दे आर डेफिनेटली कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग एंड फर्म। समीर, एफआईआईज आर बैक। काफी अच्छा मोमेंटम हमने एफआईआई फ्लो में भी देखा है, एंड डेटा टुवर्ड्स, अगर हम डोमेस्टिक डेटा देखें तो काफी अच्छा है। चाइना में दिक्कतें हैं और दिक्कतें बढ़ चुकी है, जिसका हम इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर लुक्स पॉजिटिव फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। आप क्या मानते हैं? So I hope we can hear me clearly now. Yes, we can hear you now. So जो आपका पहला क्वेश्चन था, जब when my network was not clear कि what is my expectation on the market, तो मैं आपको बोल रहा था कि हम काफी टाइम से पॉजिटिव रहे थे मार्केट पे when the markets were falling, कि the valuations had become fair, and from that point we had probability of making good returns over a 2-year period. Honest to God, इतना strong rally आएगा वो expectation हमारा भी नहीं था, and also to a large extent I believe this rally is not sustainable. जो 2000, if you look at it, 15,200 Nifty to अभी 17,700, तो 2,500 point Nifty rally that has happened without any major correction in the markets, and global situation जो है वो ज्यादा तक change नहीं हुआ है। The only thing that has started to slowly जो हो रहा है वो थोड़ा inflation down आ रहा है, but that when you say inflation down आ रहा है, it is not because production has increased and because of which prices are coming down. It is because demand is slowly reducing, and when demand is reducing, economy cannot show the same growth numbers that सब लोग जो project कर रहे हैं historical आए। Going forward, वो growth numbers definitely slow down होंगे। तो I am not of the opinion कि यहाँ से market sustainably rally कर पाएगा। I feel there is a correction due, maybe 1,000 points plus on the Nifty. कब आएगा I cannot predict, but it is expected. So I would say be very cautious. अभी ये level पे अगर आपको कुछ भी लेना है तो be very cautious. Make sure value is on your side, and make sure that 2 years from now you will be able to make return in a lot of these stocks. Don't go into these penny stocks because everything has started rallying and आपको लगता है कि अभी ये नहीं चला है तो ये भी चलने लगेगा, trying to make a quick return. आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, FIs have returned. Yes, FIs have returned, but वो change हो सकता है very fast. Thankfully, China Taiwan did not get too, वो बहुत बड़ा major issue नहीं बना, and at the moment at least things look like it may not become, after Nancy Pelosi's visit, it may not become a major issue. But we have to keep an eye on that. Crude has come off right now temporarily, but we don't know if it will sustain because Russia-Ukraine war, which is ongoing, is still not over, and Russia still remains one of the biggest producers and suppliers of crude and gas. So if sanctions continue, then it's a possibility that crude भी ज़्यादा ऊपर रहे, and inflation may not come off to the same extent that earlier expected. Plus we also have to look at the rearview mirror कि rate hikes काफी हो चुके हैं, और ये rate hikes का मतलब सब लोग के interest rates बढ़ने लगेंगे. When you are paying interest, your profitability automatically gets impacted. Consumption also to some extent gets impacted. So I would be very cautious on the market in the overall. Expect a correction. Markets can rally more, no doubt. Momentum है, कुछ भी हो सकता है. But be very cautious and expect a correction. So, good morning. सर, मेरा भी क्वेश्चन यही है कि अगर ये मार्केट में करेक्शन आना है तो हमको मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा दूर रहना चाहिए या लार्ज कैप से? So जब मार्केट करेक्ट होएगा तो सब करेक्ट होंगे. It is not saying that only large caps will correct or mid cap. Okay, index is based out of large cap, right? So it is not saying that only the large cap will correct when the index correct. Mid caps will also correct. The point is, mid cap has not rallied as much as large cap. Some of them. I'm not saying थोड़े stocks वो वैसे ये जो large cap को भी outperform कर चुके हैं, but on Jack has in this current rally. So
probability is the correction will happen across the board, but mid caps will also not correct to the same extent that large caps may correct. So expect a correction broad based. ऐसा नहीं होने वाला है कि एक ही सेक्टर करेक्ट होएगा, एक ही करेक्ट होएगा और लार्ज कैप भी करेक्ट होएगा. There's a saying in English ना, when the tide goes out we get to know who's swimming naked. तो जब थोड़ा liquidity वापस होएगा, maybe FIs may reduce their inflows, corrections will start. फिर अपना टेक्निकल्स पे दिखने लगे कि सपोर्ट लेवल्स टूट रहे तो सेलिंग प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है ट्रेडर्स से. So that time everything will start coming. Okay. Hi, good morning Aamar sir. Yeah, good morning. Sir, ये जो commodity में sell off चल रहा है, especially crude and metal, how do you see crude and metal stocks? Yeah, if you look at the metal stocks, primarily what we are seeing is that they are still holding on. Just say, for example, if I'm looking at Hindalco, they have corrected significantly. पहले क्योंकि correction almost 50% correction हम लोगों ने देखा था. Hindalco की बात करें तो almost 600 levels से it had come down to 300. Again, it's around 430, 35. So the correction, एक तो significant correction is already there and there's a bounce back. But ये जरूर है कि technically मैं charts देखूं तो they are at key resistance levels. Looking at the other stocks, suppose मैं Vedanta की बात करूं, Vedanta hasn't rallied significantly because from almost 450 levels, it's I wouldn't say half, but it's around 260, 62. So clearly shows that there is some stress there in the metal stocks. And talking about oil stocks, if you look at first to look at ONGC again, we've seen from 200 levels currently around 140. So there is a sizable correction already there. And the stocks have found, so generally what happens is कि markets में कहीं ना कहीं एक support zone रहता है. तो यदि मैं ONGC की बात करूं तो around 120 is a major support zone. So we see that it has bounced back from that. तो जो short covering है वो short covering होती है, कुछ buying, fresh buying आती है. So it's more of a trendless for the oil stocks. I am talking about ONGC. If I look at Hindustan Petroleum, if I look at Hindustan Petroleum, so again it's the same story. So we've seen that some correction has been there from almost 350 levels. Currently it's around 240, 45. So a lot of these stocks, they are still not displaying very strong strength. So higher levels पे थोड़ी selling pressure तो definitely देखने को मिल रही है, और more of a range play है for metals. You don't see a trend, a very strong bullish trend कि major कोई rally है, वैसा कुछ नहीं. It's going to be range play for most of these stocks. समीर, अभी आपने कहा कि हमको करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, मे बी नॉट, नोबडी कैन टाइम इट, लेकिन आपको ये लगता है क्योंकि आईटी स्टॉक्स उतना बड़े नहीं है, डीपली करेक्ट हुए थे, उतना मोमेंटम हमें वापस नहीं आया, तो आईटी इज अ सेफ बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम? From a 2-year perspective, IT is a very very safe bet. जब मार्केट करेक्ट होएगा तो ये सब स्टॉक भी थोड़े तो रैली हुए. फॉर एग्जांपल TCS has gone from 3000 to 3400, Infosys 1400 to 1600, HCL Tech from about 880 का लो आई थिंक अभी रिसेंटली बनाया था 960. तो वो भी थोड़े तो रैली हुए ही है. यस दे हैव रैलीड लेस देन द मार्केट, बट दे हैव आल्सो रैलीड. तो जब करेक्शन आएगा, करेक्शन विल लाइक आई सेड बी अक्रॉस द बोर्ड. देयर इज गोइंग टू बी, ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ आईटी स्ट्रांग रहेगा और बाकी नीचे आएंगे. Because the selling when it comes, जब basket selling होता है तो पूरा basket बिकता है, which includes your IT stocks, right? So is it a safe bet to invest from the 2-year perspective? 100%. मैं आपको बोलूँ यहाँ पे भी IT ले लो, but then expect कि अगर 3200 होएगा near term में, that is not a problem, because I am looking from a 2-year point. I mean TCS from 3400 to 3000, and I am looking at a 4000 rupee target. Tech Mahindra, it can go from 1080 to maybe 1000 again, and but my target is 1400 rupees 2 years from. So वो सब expectations अगर आप रख सकते हो कि 2 years में invest, आप 2 years के लिए invest करना चाहते हो, तो yes you can. And मेरा simple philosophy, these are very strong cash flow generating companies. जो structural change आया है IT में of cloud based computing, digital data analysis, 5G में अभी ये सब जो होने वाला है उसका Tech Mahindra में benefit आएगा. All these trends are still very long-term trends, and yes, growth में slow down क्योंकि base बढ़ गया है. अगर आप 100 पे 20% ग्रो करते हो वो 20 रुपीज है, पर 200 पे 20 रुपीज ग्रो करते हो वो 10% होता है. तो बेस बढ़ा है तो मे बी ग्रोथ रेट में कम डाउन, बट द प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू ग्रो.
and cash flows बहुत strong है. So I think it's a very safe investment. अमर, जैसे कि अभी समीर ने कहा कि मे बी द डिमांड गेट्स हिट बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स, अभी वो पर्कुलेट नहीं हुआ है सिस्टम में, तो ऐसे में ऑटो स्पेस में क्या करना चाहिए, जहाँ पे you know many of the broking houses have been quite bullish and they are expecting targets of 10,000 post अच्छा खासा momentum जो है मारुति में suggest कर रहे हैं, M&M में, even now for two wheelers like Bajaj Auto and Hero Moto. तो ऐसे में आपका व्यू क्या बन रहा है entire auto space, and if you are seeing some kind of a positiveness, and which is the counter that you would suggest buying at these levels? Yeah, as talking about the auto sector, if I look at Maruti, so Maruti, if you look at it technically also, that definitely it has strength compared to, यदि मैं IT देखूं technically, तो उसमें auto stocks are comparatively far better placed in that sense. So but if I look at Maruti on the long term charts, clearly shows कि Maruti has got a very strong resistance around the 9,000 mark, because February में इसने Maruti ने almost 9,000 का एक level touch किया था. Recently it had crossed that level, but it's not able to close that level. So clearly there's a double top formation on the charts. So till the time we don't see sustaining Maruti above 9,000 levels, I would say that you need to be cautious, and also other technical indicators are clearly showing that there is profit booking at these levels. Talking about other stocks, so if I talk about Mahindra and Mahindra is in a different zone altogether. यदि मैं Maruti को compare करूं Mahindra and Mahindra, तो Mahindra is a safer bet as compared to Maruti, because it has breached major levels and technically it's trading at record levels. So any correction in Mahindra and Mahindra, because Mahindra and Mahindra earlier was unable to breach the, यदि मैं इसकी बात करूं तो करीब 1,000 and 1,050. So that was a major support. So now it's around 1,250, 1,260 odd levels. So clearly this is a very strong stock. Any correction in this stock should be used as a buying opportunity, because technical indicators clearly display strong strength. Talking about other stocks, Bajaj Auto की मैं यदि बात करूं तो Bajaj Auto is more or less, I would say, it's positive. The sentiment is positive, but एक क्या होता है मोमेंटम की मैं बात करूं तो जैसा मोमेंटम महिंद्रा एंड महिंद्रा में वैसा मोमेंटम बजाज ऑटो में नहीं है. दूसरी बात क्या है कि बजाज ऑटो की मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 4,200, 4,300, that's a very strong resistance zone, because वो levels से market already touch करके it is coming down from those levels. It has come down. So ये levels जो हैं last year June में we were seeing these levels. So clearly showing that upside is more or less capped. So 4,300, 4,400, that's a major zone of resistance, but that's roughly 10% from the current levels. So on the downside, if I say somewhere around 36, 3,700 is a support zone. So zone play will be more witnessed in the auto stocks, and auto stocks are not showing very strong signs of correction as at the moment. But yes, they are moving in overheated territory at the same time. समीर सर, वीकेंड्स में आपने देखा और सुना ही होगा कि राकेश झुंझुनवाला जो मार्केट के बिग बुल कहे जाते हैं वो नहीं रहे. आपका कुछ उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूट, और साथ ही जो उनसे जुड़े हुए स्टॉक्स हैं लाइक टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स, फोर्टिस, क्रिसिल, बहुत सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स में उनकी होल्डिंग थी. आज उनका क्या रुख रहने वाला है? ओम शांति टू हिज सोल. मेरे एक या दो अपॉर्चुनिटी मिले थे उनका मिलने को, एंड 2 एडवाइजेस ही गेव मी, इवन दो आई एम नॉट अ ट्रेडर. उसने मेरे को एक बार फर्स्ट टाइम पूछा कि आपका मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैंने कहा आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन टू एक्स लेवल. तो उसने मेरे को बोला, समीर, डोंट प्रिडिक्ट द डेप्थ ऑफ द मार्केट, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. So that is one thing. The second thing he said to me was momentum is your friend, trend is your friend. So when the market बढ़ते market में लेते जाओ, घटते market में लेते जाओ. So for a trader, these are great philosophies and they should be followed. Now coming back to his stocks जो आपने पूछे, Titan Industries, I don't think a lot of them are going to have a major negative reaction. ठीक है, थोड़ा negative reaction रहेगा, because they may always थोड़ा एक risk रह सकता है कि उनका जो stock है, his wife may not want to remain an investor, meaning run the company as an investment company or whatever, and she may think it's better for me to keep the cash in some different sort of investment. So some overhang will be there, but ये सब strong cash flow generating strong companies है जो राकेश जी ने invest किया है.
I'm sure some fund house will come and pick up. If Rakesh's wife wants to sell the stake, I don't think it will be a major problem. कोई ना कोई investor आके वो दे देगा. So near term, next maybe 1-2 weeks, it may remain a little cap to see what happens, but I don't think that's a major concern. What needs to be seen is valuation wise. So, for example, I find Titan very expensive on valuation. For that reason, I would not recommend the buy. But I would not look at Rakeshji's demise as something that should affect the stocks that he's invested in. अमर जी, अगर देखें तो दो स्टॉक्स खास तौर से आज नजर रखना चाहिए कि डीएफएम फूड में एक शेयर डीलिस्टिंग को लेकर प्रमोटर ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। साथ ही मैक्स हेल्थ में 26.83% स्टेक होल्ड करता है केकेआर, जिसकी आज एक ब्लॉक डील होने वाली है करीब 9,500 करोड़ में। हाउ डू यू सी बोथ द स्टॉक्स? लुकिंग अबाउट मैक्स हेल्थ, सो वी आर ऑलरेडी सीइंग द स्टॉक करेक्ट। तो यदि मैक्स हेल्थ की मैं बात करूं तो रिसेंटली हैव सीन सम करेक्शन, और टेक्निकली इफ यू लुक एट इट, सो समवेयर अराउंड 400 odd levels, 395, 400, so it's currently around 360. So we've seen some decent correction in the stock, but long term में यदि मैं बात करूं तो it has got very strong support around 320 odd levels. So maybe there is some room for further correction, because यदि मैं medium term trend देखूं, short term trend देखूं, तो clearly they don't give too much of confidence in the sense that buying at these levels. So there can be further correction, but as I said, settling around the 300-320 zone is going to be वो important रहेगा मैक्स हेल्थ के लिए, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा डीएफएम फूड, तो डीएफएम फूड में भी have seen, if you see, तो इसमें there has been a very sharp rally. I would say that was on 12th August, तो almost 20% की अप मूव इसमें देखने को मिली, एंड द स्टॉक हैज इज करंटली अराउंड 252 ऑड लेवल्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि यदि स्टॉक के मैं हिस्ट्री में जाऊं और देखूं पास्ट में भी, तो समवेयर अराउंड द 200 जोन, 190-200 जोन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक। और ये स्टॉक जो है, यदि मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, तो 250 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट डेफिनेटली हैज अ पोटेंशियल टू रैली इन द शॉर्ट टर्म टू 275-280 ऑड लेवल्स। और वॉल्यूम भी देखूं तो 12th की जो वॉल्यूम भी रही है, दैट आल्सो हैज बीन सिग्निफिकेंटली हायर एज कंपेयर्ड टू अदर डेज। सो आई वुड से सस्टेनिंग अबव 250 इज गोइंग टू बी क्रूशियल, देन 275-280 कुड बी द लेवल्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक टेक्निकली। Sameer, there's a news with respect to Adani, अंबुजा सीमेंट और एसीसी का जो उनका खरीदने का अप्रूवल जो था सीसीआई से मिल चुका है। उसके बाद अब क्या रणनीति होनी चाहिए इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एंड अंबुजा एंड एसीसी? तो अदानी ग्रुप पे हम लोग ने एक बार पहले भी बात किया था कि आई एम ओनली पॉजिटिव ऑन वन ऑफ द काउंटर्स ऑफ, नॉट पॉजिटिव, आई एम ओनली कंफर्टेबल ऑन वन ऑफ द काउंटर्स ऑफ अदानी ग्रुप, that is Adani Port, क्योंकि जो उनका वो बिजनेस है is a very strong cash flow generating business, जो port business है. The rest of the businesses are still very high on investment mode. Cash flows अभी भी negative है, and I think it will still be a long way before some of these cash flows start turning positive. So I am someone, मैं जो हूँ individually, I study cash flows quite a lot, and I look at, I want to make sure that there's enough cash coming out of a business which will ensure the safety of an investment that happens. So from that point of view, this one is the only one. अभी जो अंबुजा और ACC है, these are good businesses which he has bought, actually cash positive businesses generating good cash flow. But जो उन्होंने वो अदानी जी ने वो प्रीमियम दिया हुआ है उनपे, he is going to have to increase his capacity to kind of service the debt that he is taking to buy out these businesses. क्योंकि the cash flow that they're currently generating is not enough to sustain the ROE, ROCE levels that he requires at the parent level जहाँ उन्होंने दिया हुआ है. So Ambuja and ECC is going to have to go into a big expansion mode to increase their capacities, to increase their profitabilities, to sustain his parent level debt. So from that point of view, I think that will be something where we need to keep an eye on. जब capacity आप इतना increase करते हैं और already industry is working at 70% utilization level, no doubt cement sector में growth है. But the growth is 1.2, 1.3 times GDP. So if we expect GDP to grow at about 10-11% on the nominal term basis,
So we're talking of cement industry growing at 14-15%. And if you're going to expand capacity, Sri Cement ने expansion announce किया है, Ultratech ने expansion announce किया है, अभी Ambuja ACC announce करेंगे. So overcapacity will remain and profitability will always remain under some pressure. So I would not be in a rush to go out and buy these stocks. अभी थोड़ा support मिल रहा है because of the buyback that will probably come, so the stocks are not correcting much. But अगर आप across the board cement pack देखें, तो all of the stocks, Sri Cement, Ultratech, the larger ones and the smaller ones, India Cement, काफी correct हुए थे. Yes, they've rallied in this rally, but the probability is that they will again correct once the correction starts. So I would stay away from most of the other stocks for me personally. अमर, अपोलो टायर्स के नतीजे आए जो काफी अच्छे थे, बेटर देन एस्टिमेट्स. चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं? अपोलो टायर्स की मैं बात करूं तो अपोलो टायर्स ने एक अच्छी रैली तो भी रिसेंटली दिखाई है. 20th मींस थर्ड वीक ऑफ जून से फ्रॉम ऑलमोस्ट 175 करंटली अराउंड 235-36 लेवल्स. तो टेक्निकली मैं बात करूं तो टेक्निकली द स्टॉक इज स्ट्रांग. इसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट. मोमेंटम, देयर इज बुलिश मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड द स्टॉक यदि मैं इसको थोड़ा सा levels देखो on the higher side where it's going to meet with resistance, so that would be around 245-250 odd levels, because January में 245 levels हम लोगों ने देखा था और अक्टूबर में 250 levels देखा था last year. तो clearly 245-250 should act. और यदि मैं थोड़ा और भी back जाऊं तो somewhere around in June 2021 245 odd levels था. तो clearly 245-250 becomes a very important resistance zone. So उसके ऊपर sustain करता है तभी कोई अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है. अदरवाइज द स्टॉक कुड गेट इनटू सम कंसोलिडेशन. टेक्निकली देखो तो टेक्निकली द स्टॉक इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड. समीर सर, आपने शो की शुरुआत में जो बात कही थी कि 1000 पॉइंट की सेल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में, इससे दो कैटेगरी के लोग बेहद खुश होंगे. एक जो कि शॉर्ट सेलर थे और दूसरे जिन्होंने रैली मिस की है. अब जो शॉर्ट सेलर तो अपनी पोजीशंस ट्रेडर हैं तो वो कवर कर ही लेंगे, लेकिन जो जिन्होंने रैली मिस की है उनको कौन कौन से स्टॉक्स लिस्ट में रखने चाहिए कि अगर गिरता है मार्केट तो उनको बाय करना है? So फर्स्ट मैं आपके एक पॉइंट नोट करूंगा. जो शॉर्ट सेलर थे जो 15,200 पे शॉर्ट थे, वो 17,700 पे शॉर्ट नहीं रह सकते, क्योंकि paying that kind of mark to market is not going to be something that they can sustain for extremely long periods of time. Right. So जो shorts है वो maybe fresh shorts है and they may also cut off at a slightly higher level. जो दूसरा point है, जो rally miss किए हैं, they will always miss the rally because whenever the market falls, there's always some negative news that brings the market down. और तभी सब लोग का expectation होता है कि और गिरेगा. जब 15,200 निफ्टी हुआ था तब सब लोग ने कॉल्स किए थे कि 13,500 भी निफ्टी पे आएगा. And everyone और गिरेगा तब लूंगा, और गिरेगा तब लूंगा. So my basic philosophy is very simple. When we speak or every time जब हमने बात किया है, when the market falls and you get good value, मैं नहीं बोलता हूँ 100% जाके आप पूरा अभी का अभी ले लो. Buy 20%, buy 25%. So अगर रैली आता है, you are part of the participation of that rally. So that philosophy I still believe and I still think will hold. Now आपने बोला था कि which are the stocks? So IT stocks, Tech Mahindra is definitely one of them. I'm very bullish on Tech Mahindra in the IT space. TCS in the IT space I'm very bullish on. In the banking space, Axis Bank, it has rallied less than ICICI Bank. From that angle, I think abhi bhi value hai, but I would love to see the price more like 600-650 levels jahan tak gaya tha in the fall to buy. IDFC First Bank, I think 2 weeks ago आपके साथ बात हुआ था, 34-35 का रेट था, वो ऑलरेडी रिजल्ट आया 45 हो चुका है. But if it comes to the 40 levels, I would definitely go out and buy IDFC First Bank. NBFCs में L&T Finance still looks very interesting. That is one more stock I would keep on my radar. It has not run up. In fact, this is one of the stocks you can buy in the rally. ITC in the FMCG space, valuations have run up, no doubt, a little bit, but they are still cheaper than the rest of the FMCG basket. Any correction to 270-280 levels, I think you must start buying into ITC. Again, strong dividend paying company, good cash flows, valuations attractive. So in the auto space, I would look at, I would still say Ashok Leyland is something that looks interesting. Mahindra and Mahindra, अपने technical analyst ने बात किया and he also said momentum is on its side. But what I want to point out in Mahindra, जो मेरी अभी recently बात हुई MD के साथ, अनीश के साथ, he said, Sameer, I have made this company recession proof.
मैंने जो गाड़ी के ऑर्डर लिए हैं, नेक्स्ट 2 years रिसेशन भी आया तो मेरी गाड़ी बिकने वाली है. आई हैव नो प्रॉब्लम्स ऑन दैट फ्रंट. So on any correction, Mahindra, okay, it's only auto is a small component. They have many verticals, tractor being the biggest. But I still believe the tractor sector is also in India still going to grow. It may find hurdles here and there, but it will continue to grow. So Mahindra and Mahindra on correction is something I'd like to buy. I mean, I can keep going on, but yeah, these are roughly some of them I can think of at the top of my head at this point in time. अमर सर, आप कहाँ प्रॉफिट बुक करने वाले हैं और कहाँ पर खरीदने वाले हैं? कुछ भी नीचे आता है या इन लेवल्स पर? स्टॉक्स की बात करूं तो आईटीसी डेफिनेटली इज वन स्टॉक वर्थ वॉचिंग आउट फॉर, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के बाद टेक्निकली इट्स वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी. तो एनी करेक्शन इन द स्टॉक शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अदर एक और स्टॉक है जिसमें ये पावर ग्रिड. The Power Grid Corporation is also one stock which is technically strong on the charts. So currently around 228 levels. तो इसमें भी कुछ correction आती है somewhere around 200 odd levels. So that can be a very good buying opportunity because upside target will be around 235 to 40 levels in the short term. So these are a couple of stocks जिन पे नजर रख सकते हैं. Thank you, Aamar. Thank you, Sameer, for your time. Pleasure speaking with you as always. Thank you, Vivek, for joining in. आज के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. Thanks for watching. Thank you. Thank you.